हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका पढ़ाई से दोस्ती यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने आज तक अलग-अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिलेटेड वीडियोस देखे, कुछ करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस देखे या कुछ वीडियोस ऐसे भी थे जो कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब ज्योग्राफी प्लस इन्फॉर्मेटिक्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो नया फील्ड डेवलप हुआ है, उसके बारे में भी हमने कुछ वीडियोस इस चैनल पे देखे। लेकिन ये जो फील्ड है जियो इन्फॉर्मेटिक्स या हम जीआईएस टेक्नोलॉजी और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बार पढ़ते हैं सुनते हैं। ये एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड और वास्ट फील्ड है। तो इस फील्ड के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये हम अ, इससे आगे भी देखने वाले हैं और ये इस वीडियो बनाने का एक पर्पस भी है जो कि हम जीआईएस डे मनाते हैं हर साल। तो उसके वजह से ये मैं वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। तो जीआईएस क्या होता है? जीआईएस होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, सो ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके आज बहुत सारे बिजनेस डेवलप हुए हैं। बहुत सारे हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के जो भी इश्यूज होते हैं वो सॉल्व हुए हैं। तो इसलिए इसको कमोमोरेट करने के लिए इसरी नाम की एक संस्था है जो कि इस जीआईएस फील्ड रिलेटेड अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाती है। ज्योग्राफी और इंफॉर्मेटिक्स ये दोनों टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करके जीआईएस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन काम करने के लिए ह्यूमैनिटीज़ की तरफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ अच्छे-अच्छे काम करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। तो ये पूरा काम करने वाली जो इसरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जीआईएस फील्ड में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जीआईएस डे मनाते हैं हर साल। तो ये 21st जीआईएस डे इस साल आने वाला है 2020 में। इसका मतलब है 1999 से ये जीआईएस डे का कंसेप्ट चल रहा है। तो इस साल इस जीआईएस डे के मौके पर हम कुछ वीडियो सेशन आपके सामने ला रहे हैं। इस वीडियो सेशन में हम अलग-अलग पॉडकास्ट देखेंगे जो कि जीआईएस और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इस्तेमाल है या ये जीआईएस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे क्या एक मकसद होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। लेकिन ये जो वीडियोज़ आएँगे, ये हमारे पढ़ाई से दोस्ती चैनल पे नहीं आएँगे। तो इसके लिए एक अलग यूट्यूब चैनल है, अलग वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म है जिसका नाम है स्पेशल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च फाउंडेशन। दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ ये नाम, आपके स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। स्पेशल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च फाउंडेशन, ओके? इसका शॉर्ट फॉर्म करके एक चैनल का नाम हमने बनाया है जिसका नाम है एसआईआर फाउंडेशन, ओके? एसआईआर फाउंडेशन जीआईएस इतना डालोगे आप यूट्यूब पे आपको ये मिल जाएगा, ओके? सो अभी-अभी बनाया हुआ ये चैनल है। तो जो भी जीआईएस डे के मौके पर हम जो भी पॉडकास्ट करने वाले हैं, ये पॉडकास्ट आप इस चैनल पे देख सकते हो। तो देखते हैं ये जीआईएस डे होता क्या है, इसको मनाने के लिए और ये जीआईएस अवेयरनेस वीक के तौर पे जो भी कैंपेन चलाने वाले हैं हम लोग, तो उसमें हम क्या-क्या इंक्लूड करने वाले हैं या कौन-कौन सी चीज़ें हम देखने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखते हैं। Hey everybody, I welcome you all on the virtual platform of Special Intelligence and Research Foundation located at Nasik. So guys, we are celebrating 21st GIS Day with ISRI on 18th of November 2020 and this video is regarding the celebration of this GIS Day on 18th of November and also the GIS Awareness Week which is from 18th to 24th of November 2020. So Special Intelligence and Research Foundation is nothing but a virtual platform on which I am going to share different GIS and remote sensing related videos, different tutorials, different webinars, podcast and different informational videos related to GIS and remote sensing technology. So guys, don't forget to visit our virtual platform on the occasion of this GIS day and don't forget to enjoy this podcast and try to sharpen your knowledge. So let's discuss about the theme plan of this GIS day and also celebration of the GIS awareness week campaign. Okay, so we are going to discuss over here the theme and plan of this GIS day, also the calendar of this GIS awareness week. So guys, the theme of this GIS day, that is the 21st GIS day we are celebrating on 18th of November 2020. This particular day we are celebrating since 1999
Okay, and in 2020, this is the 21st GIS day. So the theme over here is share your passion and inspire the world with GIS. There are n number of applications of this remote sensing and GIS technology in our day-to-day life. There are many businesses, many startups all across the world which are using this technology, and that's why the theme of this technology is share your passion and inspire the world with GIS. Okay, guys. So let's move ahead and let's see about the celebration of this GIS day all across the globe. So you can see over here on the global map that there are many different organizations, many business houses, many universities, or different NGOs. They are celebrating this GIS day all across the world. And here is about our Special Intelligence and Research Foundation. So we are celebrating this particular event in Nasik, and I am the host of this particular podcast event, Mr. Pushkar Prashant Laske, the student of Geoinformatics from Savitribai Phule Pune University. So guys, on the very first day, that is on 18th of November, we are going to discuss about what is GIS and what is the significance of this GIS day celebration. So we will discuss in brief manner that what is GIS, what is the history of GIS, what is the role of GIS in our day-to-day life. Okay, so that we will cover over here, and we will also discuss about the significance of this GIS day celebration. So let's map the world and make a difference. Okay, guys. So on the second day, that is on 19th of November, our topic of discussion will be what is geoinformatics and is it worth to study it, that we will analyze. On the third day of this GIS awareness campaign, that is on 20th of November, we will discuss what is location intelligence and how it impacts the project costing. So we will discuss about this locational intelligence and the role of this particular technology to reduce the cost of different projects. Okay, so let's discover the world through this GIS. On the fourth day, that is on 21st of November 2020, we will discuss the topic which is given on the screen. You can able to see how remote sensing and GIS helps us in disaster warning and navigation system. So there are many disaster early warning system developed by different government organization, different NGOs all across the world, and how they functions by using this remote sensing and GIS technology. And there is a different types of navigation system which is used by different air force, navies, armies, also the common man. Okay, so how this navigation system they works, okay, that we will discuss over here. Then on the fifth day of this GIS awareness campaign, we will discuss the topic that is what is the role of GIS in climate positive design. So what is this climate positive design, that also we will discuss, and the role of GIS to design such a climate positive structures, that also we will study over here. On the sixth day, we will brainstorm on the topic that is what is the role of GIS in environmental impact analysis process. So guys, we all are aware that environment is a very crucial topic nowadays. We are facing different environmental problems, environmental imbalance, human and nature conflict, human and animal conflict, also the phenomenon like the climate change, sea water rise, and all these things. So we will discuss the role of GIS to tackle this environmental problem by environmental impact analysis process before establishing any particular project, policy, or any other such a structure which harms the environment, okay, or which may harm the environment. On the last day of this GIS awareness week or GIS awareness campaign, we will discuss about what are the applications of remote sensing and GIS technology in our day-to-day life. We are using different mobile applications, different portals, different online platforms where this remote sensing and GIS technology plays a vital role, and we even don't know that which are these platforms or what is the spread of this particular technology in our day to day life, what is the penetration of remote sensing and GIS technology in our day to day life. So all these things we will brainstorm during this entire week, that is the GIS awareness week or GIS awareness campaign on the occasion of GIS day, 21st GIS day, which we are celebrating on 18th of November 2020. So guys, I urge you to
visit this virtual platform and don't forget to enjoy this particular campaign or the podcast. These all are the public podcasts, and you can enjoy GIS Day and sharpen your knowledge about GIS and its application during GIS awareness campaign. You can support us to spread awareness about this technology to achieve bright and sustainable future by sharing this campaign and this particular video session with maximum people, with your friends, family, colleagues, junior and senior members of your organization. So guys, let's celebrate this GIS day, the technology working towards a better future. Don't forget to visit virtual platform of Special Intelligence and Research Foundation. Also share your ideas, experience, skills and knowledge about this life-changing technology in comment section. Also give your feedback and suggestion which are always welcome on this virtual platform. So guys, thank you very much. Have a great day.